हाँ कुछ नहीं है. Very warm good morning to all of you. Welcome to my channel Guru Mandra with Sunil Kumar. Today we are here with a new chapter, that is lesson number 1, economics, the story of Palampur. First of all, many of the students, those who are going to class 9th, is unaware of this subject, economics. Economics is a new subject for you. So I would like to tell you what is economics. When we talk about economics, economics is the study of human behavior, that how people earn their livings. It is a definition given by one of the famous economists, A.J. Brown. When we talk about economics, economics is the study of human behavior, that how people earn their living needs. अर्थशास्त्र इसे हम हिंदी में कहते हैं, और ये उस चीज की अध्ययन है जिसमें हम ये अध्ययन करते हैं कि लोग किस तरह से व्यवहार करते हैं अपनी जीवन यापन कमाने के लिए और अपने जीवन यापन की स्रोत पाने के लिए और साधन पाने के लिए. Further, it is a branch of knowledge concerned with the production, consumption and distribution. यह उस ज्ञान की शाखा है जो किससे जुड़े हुए हैं, प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, उत्पादन से जुड़े हुए हैं, कंजप्शन खपत से जुड़े हुए हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन यानी उसकी बंटवारा कैसे किए जाते हैं, या फिर ट्रांसफर ऑफ वेल्थ, ये जो चीजें बनाई जाती है, उत्पादित किए जाते हैं, उसको किस तरह से ट्रांसफर करते हैं, किस तरह से उसे उत्पादित करते हैं, या फिर उसकी कंज्यूमर्स कौन है और कंजप्शन किस तरह से किए जाते हैं, और एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू मनी or activities related to production, consumption and distribution can be called as economics. When we talk about economics, we know what is history, we know what is political science. In history, we study about the events of the past. In political science, we study about the political institutions and the ongoing political activities and scenario all around the world. Likewise, we see how human beings' behavior and how they earn their livings through different economical activities like production, like distribution and consumption, etc. So, moreover, economics tells us how societies use scarce resources to produce valuable resources. इसके अलावा अर्थशास्त्र में ये भी बताते हैं कि समाज या फिर लोग, ह्यूमन बीइंग्स, जो स्केयर रिसोर्सेस है यानी जो दुर्लभ मात्रा में, बहुत कम मात्रा में प्राप्त होने वाली वस्तुओं से कीमती चीजों की या फिर यूजफुल प्रोडक्ट्स की उत्पादन कैसे करते हैं. What do you mean by valuable products? Products that can be used in our life, useful products. It tells us how human beings use the scarce resources that they get from around and convert them into valuable resources. So when you want to convert resources into valuable products or valuable resources, you have to carry on production activity. Whenever you want to convert any resources into another useful form, then what does take place there? Production activity takes place. Once production is completed, distribution is needed to distribute the products or to take them to the consumers. Once the produced products are taken to the markets, they are distributed among the consumers and the consumers consume it. So economics is all about those activities which revolves around production, consumption and distribution. Economics मानसिक गतिविधियों की बारे में बताते हैं जिसके जरिए वो अपनी जीवन यापन की साधन कमाते हैं, खास करके प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन से जुड़े हुए बातें जो है इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं.
इकोनॉमिक्स में हम अध्ययन करते हैं। इसके अलावा समाज के लोग अपने चारों तरफ जो दुर्लभ मात्रा में या बहुत कम मात्रा में जो संसाधन पाए जाते हैं उससे किस तरीके से वैल्यूएबल रिसोर्सेस या वैल्यूएबल सरप्लस प्रोडक्ट्स में यानी फाइनल प्रोडक्ट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उससे वो अपनी जगह से कमाते हैं, उस में हम किसके अंदर अध्ययन करते हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर अध्ययन करते हैं। देयर इज नो नीड टू go detailed study about this topic. I am just introducing what is economics to you because for the first time you are going to study economics before class 8. Up to class 8 you only studied about history and political science. Economics is a new subject, that's why I have introduced you this topic to you. Now we are getting into our lesson, that is the story of Palampur. Once we talk about the story of Palampur, Palampur is a hypothetical village created here. Palampur एक hypothetical village है. There is no real Palampur lies anywhere in India. भारत में कहीं भी पालमपुर नाम का कोई गांव नहीं है. Maybe there is a name associated with it, but in this lesson it is only a hypothetical, means imaginary village. The story of Palampur, जो पालमपुर की कहानी है, इस लेसन में जो पालमपुर है वो एक इमेजिनरी विलेज है. क्या है? एक इमेजिनरी विलेज है, हाइपोथेटिकल village. It is a hypothetical village, means it is not really existing anywhere. It's only created for the purpose of studying the main aspects of production and what are the different aspects associated with production in Indian villages. इस बात को समझने के लिए, यानी the main purpose of the story is to introduce some basic concepts. Some basic concepts relating to production. इस अध्याय में जो स्टोरी ऑफ पालमपुर है, इस पालमपुर आपकी जो चार्टर में दिए हुए हैं, इट्स अ विलेज बट इट इज नॉट ए रियल विलेज. इट डजंट एक्सिस्ट एनीवेयर इन इंडिया. इट्स ओनली ए हाइपोथेटिकल विलेज. ये गांव जिसके नाम हम पालमपुर के नाम से इस अध्याय में पढ़ रहे हैं, वो एक काल्पनिक विलेज है. ये इमेजिनरी है और ये कहानी के जरिए हम क्या पढ़ना चाहते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन. उत्पादन की प्रक्रिया से जुड़े हुए जो अलग अलग पहलू है उसको समझना हमारा मेन मकसद है. तो द मेन पर्पस ऑफ क्रिएटिंग ए इमेजिनरी विलेज एंड on the activities going on in this particular village which we call Palampur, we want to study the different aspects and activities going behind production. जो उत्पादन प्रक्रिया है उसके पीछे कौन कौन सी चीजें होती है और किस तरह की गतिविधियां होती है, और which are the things we want to क्रिएट फॉर स्टार्टिंग प्रोडक्शन एनीवेयर. तो किसी भी जगह उत्पादन की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए कौन कौन सी मेजर चीजों की आवश्यकता होती है, इस संबंध में जो जानकारी है उसे प्राप्त करने के लिए हमने एक गांव की कहानी ली है जिसका नाम है पालमपुर. सो इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ योर लेसन. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इमेजिनरी